Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start Unit 6. Its title is Teamwork. So, first we'll discuss SLO-based lecture division for this unit, and then we'll discuss what this unit is all about. So, my dear students, in lecture 1, under the title of Formal and Lexical Skill, we'll understand sentence structure and we'll cover the SLO to make simple sentences by using SV means subject and verb and SVO means subject verb object pattern. Recognize that sentences comprised subject plus predicate. Lecture 2 again under the title of Formal and Lexical Skill, we'll learn about possessive adjectives and we'll cover the SLO to recognize and use words my, your, his, her, its, our, their before nouns to show possession. Lecture 3 under the title of Pronunciation Skills, we'll learn final sound of ed as d, t, and it, and two consonant clusters, and we'll cover the SLO to classify words that begin or end with the same two consonant clusters and recognize that ed has three sounds as d, t, it, as in looked, danced, and landed. Lecture 3B, language focus, we'll learn about trigraph and we'll cover the SLO to articulate and identify words containing digraphs and trigraphs. Our focus for this lecture will be trigraphs in initial, middle, and final position. Lecture 4, under the title of grammar, we'll learn about inflectional endings and we'll cover the SLO to recognize a specific part of words including common inflectional endings. Lecture 5, under the title of Formal and Lexical Skill, we'll learn about directions and we'll cover the SLO to recognize different directions beyond, behind, upon, downward, etc. in their immediate and extended environment. Lecture 7, we'll learn how to agree or disagree politely, and we'll cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of group oral interaction to agree or disagree politely. Under the title of reading, we'll learn to read a recipe and we'll cover the SLO read familiar words appearing on a variety of reading material such as advertisements, recipes, captions, etc. Lecture 8A, under the title of Listening and Speaking, we learn to use polite expressions to seek attention and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in groups to use polite expressions to seek attention. Lecture 8B, under the title of Read and Think, we learn to read advertisement and captions and we'll cover the SLO to read familiar words appearing on a variety of reading materials such as advertisement, recipes, captions. Lecture 9, under the title of Writing, we learn ordinal numbers 1st to 30th and we'll cover the SLO to write ordinal numbers 1st to 30th in words, provide the missing letters in simple 2 or 3 syllable words. Lecture 10A, we'll learn to read a map and we'll cover the SLO to explain simple position on a picture, illustration, or a map. And 10B, we learn to write expository writing and we'll cover the SLO write a few simple sentences to describe or show sequence in picture. Write an expository paragraph explaining a process or procedure. Lecture 11, under the title of Writing, we learn to complete the story by filling in words. And we'll cover the SLO to use appropriate vocabulary and tense to write a simple guided paragraph by filling in words to change or complete a given story.
Yes, my dear students and my fellow teachers, you have seen there are many things in this lesson to learn. So inshallah, we'll learn it by SLOs. Now let's see what this unit is all about. Its title is Teamwork. This is a beautiful poem. और बेटा टीम वर्क का क्या मतलब है कि एक ग्रोह में काम करना. तो हमें जब भी एक से ज़्यादा लोग मिलकर हम काम करें तो हमें एक टीम के तौर पर काम करना चाहिए. इसका क्या फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे, बिकॉज बेटा वी अलोन वी आर नथिंग. हमें हर मौके पर किसी न किसी की ज़रूरत होती है और इसी तरह मे बी किसी को हमारी भी ज़रूरत है. सो व्हेन एवर वी नीड समथिंग हमें इकट्ठे होकर एक ग्रुप की शक्ल में काम करना चाहिए. यही इस पोम का थीम है और देखते हैं कि इसमें किस तरह से इसको डिस्कस किया गया है. टीम वर्क इज़ द की. ग्रुप में काम करना बुनियादी चीज़ है टू गेटिंग थिंग्स डन कोऑपरेटिवली. बाहमी ताउन के साथ किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए. यानी अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल करना चाहते हैं तो आपको टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए. शेयरिंग आइडियाज़ एंड लिसनिंग टू. जो भी आपके दिमाग में बात है, शेयरिंग आइडियाज़, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है वो दूसरों को बताइए. एंड लिसनिंग टू, और जो दूसरे बताते हैं उसको भी गौर से सुने. वर्किंग टुगेदर टू सी इट थ्रू, और फिर मिलकर काम करें, अपने प्लान को, अपने आइडिया को मुकम्मल होते हुए देखें. यू वर्क विद मी, आप मेरे साथ काम करें, एंड आई वर्क विद यू, और मैं आपके साथ. बेटा ये है बेसिक चीज़ कि जब आप टीम में काम करते हैं तो आप दूसरों की हेल्प करते हैं. हम सिर्फ ये नहीं चाह सकते या सोच सकते कि दूसरे हमारी हेल्प करें. जब दूसरों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो वी शुड हैव, यू वर्क फॉर मी, आई विल वर्क विद यू, राइट. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम. हम एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे को हेल्प करें और फिर उससे हमारा काम जो है वो अहसन तरीके से कंप्लीट होगा. When we all work together, जब हम मिलकर सब काम करते हैं, we get things done, तो हम अपना काम, अपना जो भी हमारा प्लान होता है उसको हम मुकम्मल करते हैं. एंड वर्किंग टुगेदर इज़ मच मोर फन, और इसके साथ साथ मिलकर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम उसका बहुत मज़ा भी आता है. और बेटा हम एक फ़न वे में एक दूसरे से सीखते हैं क्योंकि हम सब की सलाहियतें डिफरेंट होती हैं. जब हम मिल के काम करते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते भी हैं. इसलिए हमें हमेशा जब भी कोई क्लास में प्रोजेक्ट मिलता है या हमें घर में कोई काम करना होता है, हमें मिलकर काम करना चाहिए. एक दूसरे को ऑब्ज़र्व भी करें कि कौन हमारे फ्रेंड्स में से इस काम में अच्छा है. जैसे किसी की अगर स्केचिंग अच्छी है, किसी की कलरिंग अच्छी है, किसी की राइटिंग, तो हम सब मिलकर जब अपनी अपनी स्किल्स लाते हैं तो वो काम बेहतरीन होता है. और इसके साथ साथ जो स्किल्स हमें अपने अंदर मज़ीद निखारने की ज़रूरत है वो भी हम एक दूसरे से सीखते हैं. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क. और ये बेटा हम तो सीख रहे हैं अपनी इंग्लिश की बुक में, लेकिन टीम वर्क का कॉन्सेप्ट हमें अल्लाह ताला कुरान पाक में भी सिखाते हैं. आपने ये खूबसूरत एक आयत है सूरह अन-नहल आयत नंबर 10. It is who sends down water. अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाते हैं. किस शक्ल में? रेन, बारिश की शक्ल में. From the sky. From it you drink. आप इस पानी में से पानी पीते हैं. And from it, और इसी पानी में से grows the vegetation on which you send your cattle. पौधे उगते हैं जिस पर आपके जो मवेशी हैं वो चरते हैं. अब देखिए अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई और हम सब लोग जितने भी जानदार हैं वो इस बारिश से फ़ायदा उठाते हैं. और हम कैसे, अल्लाह ताला हमें पानी देते हैं, हम उस पानी को पीते हैं, हमें एनर्जी मिलती है. हम अपनी एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? अपने कैटल्स, अपने पेट्स, इर्द गिर्द की चीज़ों पर हम उनकी केयर करते हैं. सो दिस इज़ हाउ अ टीम डेवलप्स, राइट. तो हमारी जो एनर्जीज़ होती हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर करें, उनको हेल्प आउट करें. इससे क्या होता है कि एक पूरा सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से चलता है और हम उस सिस्टम का एक अच्छा मेंबर बनते हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क. आई होप यू अंडरस्टैंड.
آج جو اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. کل انشاءاللہ گرامر کے لیکچر سے ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.